The mat formed by mosses retains sufficient moisture during rainy conditions. Retain sufficient moisture during rainy season, which favors germination of seeds of annual grasses, which favor germination of seeds of annual grasses, such as poa, P-O-A, poa, leucine, E-L-E-U-S-I-N-E. These grasses grow till moisture is present. These grasses grow well till moisture is present. They further help in formation of soil. But due to shading effect, they causes death of mosses. And they form conditions favorable for the growth of perennial grasses. The annual grasses die. Aman likh le. The annual grasses die when the conditions become dry. The annual grasses die, D-I-E, on coming of dry conditions. Then next है perennial grass stage. Various perennial grasses such as cyanopogone, heteropogone, replace annual grasses and starts growing. Their roots penetrate deep. Hanji beta, starts growing. Their roots penetrate deep in the rocks, thus forming more soil. Full stop करके more humus is added
more humus is added by the death of annual grasses. By the death of हाँ एनुअल ग्रासेस. हाँ जी, कहाँ से रिपीट करना है सारा? कहाँ से रिपीट करूं? इससे पूछो जरा, ये क्या है? एंड द मोर ह्यूमस इज फॉर्म्ड ड्यू टू डेथ ऑफ एनुअल ग्रासेस. नेक्स्ट आ जाइए, श्रब स्टेज. नेक्स्ट है श्रब स्टेज. Along with perennial grasses, श्रब स्टेज में आ जाइए. Along with perennial grasses, the seeds of small shrubs such as Ziziphus, duranta, etc. also germinate. फुल स्टॉप करके the shrubs shade the area. बड़ी बड़ी shrubs है. Shade the area, makes it more moist, and causes germination of higher woody plants. एक मिनट बेटा. और लास्ट आ जाता है बेटा क्लाइमैक्स कम्युनिटी. क्लाइमैक्स कम्युनिटी में लिख लो वेरियस लार्ज वुडी प्लांट्स having या occupying large surface area starts growing. The environment slowly becomes more moist. Which produces more shade. Due to which grasses as well as shrubs more shade, बहुत shade, SHADE. Due to which small grasses and shrubs do not get enough light. अमन जरा बंद कर बेटा. Due to which the grasses and shrubs do not get enough light and thus could not grow. अभिषेक कुमार भी लड़का है ना? अभिषेक पठानकोट. The climax community has high diversity. Due to which it is most stable. Due to which
is most stable and is not replaced by any other community. This is climax stage. ठीक है, दिस इज क्रस्टोस लाइकन्स, ये मॉसेस, ये सारी एक के बाद एक कंडीशंस आ रही है. चलो जी, ये बना लो. हाँ जी बेटा. मोस्ट स्टेबल एंड इज नॉट रिप्लेस्ड बाय एनी अदर कम्युनिटी. धीरे धीरे रॉक की जगह पे, है ना, आज एक जगह पे रॉक है, अगर हम अगला जन्म लें तो शायद अगर हमें पुराना जन्म याद रहे तो वहां पे फॉरेस्ट बना हुआ हो. ठीक है ना, तो पाइन. हाँ, उन्हें वहाँ पे कंडीशंस क्या, जो वाटर चाहिए उन्हें वो कैसे मिलेगा. कुछ बारिश तो होएगी, हमने कहाँ से देना है. जंगल अपने आप ही ग्रो करते हैं कि हम रोज पाइप लेके जंगलों को पानी देते हैं? नहीं ना, खुद ही ग्रो करते हैं बेटा. ठीक, चलो बना ले. अमन डायग्राम बना ले बेटा. बना लिया, बड़ा फास्ट है. गुरजीत हो गया? बेटा बार बार माइक ऑन ऑफ मत करो, खराब हो जाएगा फिर, ना मेरी और ना तुम्हारी. बस हम फिर इशारों से ही बातें करेंगे. शोर आ रहा है इसीलिए करते थे. हाँ, या तो ऑफ ही रहने दो, जब जरूरत हो तभी. हमने बोला कि ऑफ रहने दो. बार बार नहीं बेटा, नहीं तो ये ऑन ऑफ तुम्हारे लिए खेल है, बट उसके बाद बाय बाय टाटा. नेक्स्ट आ जाते, बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं. नेक्स्ट इज हाइड्रोसियर. नेक्स्ट है हाइड्रोसियर. हाइड्रोसियर है सक्सेशन इन शैलो वाटर बॉडीज. सक्सेशन इन शैलो वाटर बॉडीज, दैट इज हाइड्रोसियर. फर्स्ट आ जाइए, प्लैंकटन स्टेज. प्लैंकटन स्टेज, it forms the pioneer community. हाँ जी, प्लैंकटन, PLANKTON, प्लैंकटॉन्स. प्लैंकटॉन्स होते छोटी छोटी एल्गी है जो पानी के ऊपर बहती रहती है. ठीक है, दे फॉर्म द पाइनियर्स. दे फॉर्म pioneer community in hydrosphere succession.
in hydrosphere succession. They are unicellular. They are unicellular and passively floating. And passively floating on the surface of water. Green photosynthetic planktons. Green photosynthetic planktons are called as phytoplanktons. Whereas non-green consumer planktons are called as zooplanktons. Are called as zooplanktons. Death and decomposition of planktons. डेथ एंड डीकम्पोजिशन ऑफ प्लैंट. समुद्र में बेटा, ओशंस में सक्सेशन नहीं होगी, उसमें पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बहुत डीप होती है. डीप रिवर्स में भी सक्सेशन नहीं होगी. कहां पे सक्सेशन होती है? दैट इज शैलो वाटर्स में. ठीक है ना. तो क्या है? डेथ एंड डीकम्पोजिशन ऑफ प्लैंक्टन्स एड्स मोर सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर. Adds more soil and organic matter which gets deposited at the base of the water bodies. Full stop करके formation of more soil in the water bodies favors the growth of next seral stage. Favors the growth of next seral stage. Next seral stage is submerged hydrophytes. I am just coming. तो मैंने बताई थी आपको, पहले है प्लैंक्टन स्टेज, सेकंड है submerged hydrophyte stage. Due to deposition of soft mud and organic matter at the base of water body, submerged plants like hydrilla, potamogeton, najas. Hydrilla, potamogeton, potamogeton, najas, grows. Full stop करके. Their roots penetrate in the mud. The older plant dies and gets buried in the soil or mud, thus forming more of mud. Full stop करके. Deposition of more mud and evaporation of water from the surface.
makes it shallower, makes the water body shallower, and the water becomes unclear, muddy सा हो जाएगा, water becomes unclear, due to which light cannot penetrate, light cannot penetrate inside the water body. पानी में न्यूट्रिएंट्स है, पानी में सॉइल है, बट लाइट नहीं जा रही, तो जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स है वो नहीं ग्रो करेंगे. ठीक है, फुल स्टॉप करके. दिस मेक्स द कंडीशंस, दिस मेक्स द कंडीशंस फेवरेबल for the growth of rooted immersed plants. Immersed means जिसके leaves वगैरह बाहर हो, जैसे लोटस वगैरह है. Immersed plants such as lotus, water lily, etc. लोटस, वाटर लिली, एटसेट्रा. फुल स्टॉप करके. इवेपोरेशन ऑफ वाटर, कॉमा, water loss due to transpiration from plants, water loss due to transpiration by plants, and due to death and decay of older plants. Makes water body more shallow. नेक्स्ट स्टेज है रीड स्वैम्प स्टेज, REED, रीड swamp, SWAMP, swamp stage. Due to shallowing of water bodies, due to shallowing, बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है. Due to shallowing of water bodies, comma, amphibious plants, amphibious plants such as Sagittaria, SAGI, such as Sagittaria, typha, starts growing. Swamp होता है दलदल सा, starts growing. The plants of, full stop करके, the plants of swamp area transpire large amount of water. नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेज आ जाती है मार्श मिडो स्टेज, MARSH, मार्श मिडो, MEADOW, मिडो स्टेज. It starts with the growth of grasses. It starts with the growth of grasses and herbs in the moist soil. In the moist soil. नेक्स्ट है वुडलैंड स्टेज. जैसे जैसे नई स्टेज आती है पुरानी खत्म होती रहती है. Woodland stage. The grasses and herbs, the grasses and herbs are slowly replaced by shrubs and trees. They build up more soil.
और लास्ट है क्लाइमैक्स फॉरेस्ट। क्लाइमैक्स लास्ट स्टेज आ जाती है क्लाइमैक्स फॉरेस्ट। ठीक है। इट हैज हाईएस्ट डाइवर्सिटी, most stable and cannot be replaced by any other community। और बेटा इसके लिए एक पेज छोड़ दो, ठीक है ना, एक पेज छोड़ो और आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, प्लैंकटन स्टेज, उसके बाद सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, देन मार्श मिडो स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज, मार्श मिडो स्टेज। ठीक है, ये है तो वो बना के लाना है, क्योंकि 5 नंबर में सक्सेशन पे क्वेश्चन जरूर आना है। इज इट ओके? और बगैर डायग्राम के कुछ काम नहीं चलेगा। हाँ जी गुरजीत, कुछ पूछना है आपने? चलिए जी। सो नेक्स्ट आ जाता है बेटा न्यूट्रिएंट साइकिल्स। न्यूट्रिएंट साइकिल्स है, एटमॉस्फेयर से कार्बन ले रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, फिर कैसे कैसे उसको यूज कर रहे हैं और डेथ के बाद फिर कार्बन छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह नाइट्रोजन ले रहे हैं, नाइट्रोजन रिलीज कर रहे हैं। दिस इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। द एक्सचेंज, स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ biogenetic nutrients through various components of the ecosystem, so that these nutrients, चेक करना होगा ना, these nutrients can be used again and again, is called as biogenetic, is called as biogeochemical cycling या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। 1 मिनट बेटा।